Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality videos for history optional. Now, this is day 2 of teaching you how to write an optional answer through the history optional paper 2025, right? In the previous video, I had already discussed one question. If you have not seen that, you must go and see that question. Now, moving on with today's question. Today's question says, the Harappans were not an artistic people, comment, right? So first and foremost is why exactly we need, in order to understand how to write this question, we need to understand what is the mindset of the examiner behind this, that what exactly the examiner wants to know by asking us this question, and from where has this question been taken. देखो एक चीज मैं साफ साफ बता देती हूँ. Now, if you feel that you will just take the notes what is available in the market, you will read and you will write it in the exam, you are not going to get 300 plus marks. If you want to get 300 plus marks, you have to put in the effort. You have to do your readings. Don't worry if you don't know what to read. I'm going to tell you what to read, but then it's you who have to read. I cannot come and spoon feed you. Like, I will teach you today what to write, how to write. I will give you the content, but it is you who will have to write the answer, right? Only then you will reach to perfection. Now moving on to this. So why, and first thing is, why and from where was this question taken? See, if you read Upinder Singh, open to page number 185. Okay, let me read you two lines. In page 185, it is said, she writes, early writings tended to contrast the plainness of Harappan artifacts with the opulence of their Egyptian and Mesopotamian counterparts. Full stop. Nowadays, the technological sophistication and beauty of some of the Harappan artifacts are recognized, right? So this question, actually these 2 or 3 lines that have been written here summarize the crux of this question, and she has discussed it from page 185 to page number 205 of this particular book, right? So you have to do the reading. Now, what is the core? Let us move to what is the core idea of this question. See, the core idea of this question is that initially in the early phases, when the Harappan civilization was unearthed, when the artifacts were unearthed, generally these early archaeologists, they tried to compare what they found here with the other contemporary civilizations, that is Mesopotamia and Egyptian civilization, and compared to what they found over there. They said that the Harappan civilization was plain and it was utilitarian, and people basically did not know or did not do much artistic. They did not have an artistic mindset basically, right? So here, was it actually true that they did not have an artistic mindset? No, it is because they are comparing to someone that they are saying that, see, this is not artistic, right? So Upinder Singh here says, not just Upinder Singh as well as there are other historians, and I'm going to give you the view of other historians. What they say is that art is something that is very personal, okay, and art is something that should be understood in its own unique way. जरूरी नहीं है कि what I see as art, you also will see as art. For example, there are some paintings, which have some lines and all, and generally what people think is that यार ये मैं भी बना सकता हूँ, ये थोड़े ना, ये क्या है इसमें इतना. So that is whereas you will find some other people who are really happy about it and who will pay a high price to get that painting. So art is very subjective. So what these guys say is, that is Upinder Singh and other historians, they try to say is, we have to understand Harappan art in the context of the mindset of the Harappan people, not as a comparison to others. Only when we do this, that we will see that the Harappan people were actually artistic people, and the generalization that they were utilitarian is not right? Now, what is the meaning of the word utilitarian? Utilitarian means basically which focuses on the functionality of a thing, which focuses on the function. For example, if they have to make a mug to hold water, what they are going to do is they are going to actually see whether the material of which they are making, the terracotta, etc., whether how much amount of water it is being able to hold, not exactly the design that is there on the mug. The design that is there on the mug, how the mug looks, its shape, that is called aesthetics, that is called artistry. But only focusing on the purpose for which it is made is basically utilitarian. Okay, so that is kind of a difference. Now, first in this question, when you write, you have to first compare. ठीक है, compare कैसे करना है? Okay, and one more thing is, if you go to this question, it says comment, right? The Harappans were not an artistic people. Comment का मतलब क्या होता है? Comment का मतलब basically ये होता है कि you have to give your own opinion.
ठीक है. You have to mention about both sides. That is the people who say they were not utilitarian. You have to also mention about the people who say they were utilitarian, the various arguments given by both the groups, and then you have to give your own opinion in a very balanced way, not taking extreme sides. Right? So this is the demand of this question. Now let us look at the content, what should have been there, and the core idea. So core idea तो मैंने बता दिया इसमें कि जो conventional view है, the conventional view holds that it was utilitarian civilization. Why? Because there was no large scale monuments or sculptures like the pyramids in Egypt and the ziggurats that is present in Mesopotamia. Ziggurats क्या है? They are basically large temples that had been found in the Mesopotamian civilization. ठीक है, तो उनके संग अगर हम कंपेयर करते हैं तो हरप्पन पीपल का क्या है, इस तरीके से कोई लार्ज टेम्पल हमें नहीं मिला है, इस तरीके से कोई लार्ज पिरामिड हमें नहीं मिला है. बट देन वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाट वी हैव फाउंड इज हमें प्रॉपरली लेड आउट ग्रिड्स मिले. ठीक है, ग्रिड लेआउट ऑफ सिटीज, इवन दो नॉट ऑल द ग्रिड्स वेर परफेक्ट बट स्टिल देयर वाज अ प्रॉपर प्लान्ड ग्रिड लेआउट. द ब्रिक्स वेर ऑफ इक्वल साइज, द थिंग्स हैड अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो इस तरीके की चीज़ें हैं. वी हैव फाउंड द ग्रेट बाथ. तो ये सब भी क्या है, ये सब भी तो सोच के ही निकलता है. दीज आर ऑल्सो आर्टिस्टिक expressions of the creativity of the people. ठीक है, that is what the other historians will focus on. So the early archaeologists like Sir John Marshall, and we have to mention about Sir John Marshall because he was the one who pioneered or who was the first one, kind of first one to say कि they were Harappans were utilitarian people. ठीक है, he was not the only one. There have been other historians also, but he is one of the most pioneer ones who had given this idea, right? Because he was an early archaeologist. So considered that the Harappans as utilitarian rather than artistic, right? But modern scholars contradict this view and have given several arguments to support their theory, right? And this is what the question asks to know, whether you have done your readings or not, कि notes के बाहर आपने पढ़ा है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं कि करंट में चीज़ें क्या चल रही हैं या फिर क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इन हिस्टोरिकल analysis regarding the Harappan civilization. ठीक है, now moving ahead. So the Harappan civilization, okay, the model introduction कि क्या आपको लिखना है. This is not a perfect introduction. Perfect introduction is going to be written by you in your own way. Here what you need to do is I am just giving you a brief idea of how to write an introduction. So generally when we write an introduction, what you have to do is कि शुरू में जो lines होते हैं ना, generally it has to be kind of general line, right? That has to be followed by what you have understood of the question that has been given. मतलब आपको एग्जामिनर को क्या करना है, एग्जामिनर को एक तरीके से आपको समझाना है, आपको बताना है कि you have understood the crux of the question, right? ठीक है, so yes, so you have to let the examiner know that you have understood the crux of the question, right? So here let us see a little bit. You can write the Harappan civilization spanned across the late Neolithic and the Chalcolithic period. ठीक है, एक जनरल लाइन हो गया. Then is compared to other contemporary civilizations like the Egyptian and the Mesopotamian civilization, it is often characterized as utilitarian in its material remains. ठीक है, किस एस्पेक्ट में यूटिलिटेरियन बोल रहे हैं, उसके जो मटेरियल रिमेन्स है, मतलब आज हमें जो उसके रिमेन्स मिले हैं उसके बेसिस पे उनको हम यूटिलिटेरियन के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट इज, for example, John Marshall considered that the Harappans were not artistic in true sense. However, his views have been refuted by scholars like Stuart Pigott and Upinder Singh. ठीक है, तो इस तरीके का क्या है, इस तरीके का इट इज़ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन जिसमें आप एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि देखो जो पूछा जा रहा है वो मुझे पता है. आप एक काइंड ऑफ जर्नलिस्टिक ओपिनियन भी दे रहे हो कि हाँ मुझे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पता है. आई नो इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वॉट यू वॉन्ट टू नो. ठीक है, मतलब कि जिन्होंने यूटिलिटेरियन बोला था जॉन मार्शल, उनका भी व्यू हमने दे दिया. हमने ये इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हमें ये पता है, प्लस हमने ये भी बता दिया इंट्रोडक्शन में कि हमें उसका काउंटर व्यू जो है दिस स्टुअर्ट पिगट एंड उपिंदर सिंह ने दिया है, हमें वो भी पता है और आगे हम बॉडी में ये चीज़ लिखने वाले हैं. Understood? So this is how a good introduction should be like. Now do not worry, you do not need to perfect it in one day, but also definitely what you have to do is you have to write. बिना लिखे लिखे नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा. Rather, I would suggest that after listening to this video, what you do is you go take your Upinder Singh, read from page 185 to page 205. I am talking about the new edition. After seeing the video and that one, sit down and write your own answer. Right now, after a few days, maybe around a week or so, I am going to launch this thing that you can send me your answers and I am going to correct it.
and yes, and definitely you can mail me your answer, and I'm going to check it and mail you back. So that we are going to do, but since it's a very crude setup, it's going to take some time, right? Okay. And yes, regarding my credibility, I have been a faculty of a very reputed coaching institute in Eastern India for a considerable period of time. I am Masters in History from a very reputed university, that is Jadavpur University, and I have also been a topper in my class, okay, both in this ICSE as well as in my college, right? So do not worry, it's not a random YouTube channel, you are in the right hands, okay? Now moving ahead. So in the body, since the question says comment, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि बॉडी में क्या है कि कमेंट है, इसका मतलब कि दोनों ओपिनियन एंड यू हैव टू गिव योर ओन बैलेंस्ड ओपिनियन. सैम्पल मैंने लिखा है बॉडी का, आई हैव नॉट रिटन द बॉडी, ओके, आई हैव रिटन अ सैम्पल ऑफ द बॉडी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द कंटेंट. तो हरप्पन्स वर नॉट आर्टिस्टिक पीपल अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टडी में, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस कंपैरेटिव अप्रोच दैट दे फेल टू एनालाइज द यूनिकनेस ऑफ द हरप्पन आर्ट एंड द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो हटाते हैं. अभी हम आते हैं कि किस बेसिस पे. ऑप्शनल का आंसर है तो हम ऐसे सिर्फ थोड़ा सा लिख के नहीं रख सकते, हमें क्या है, हमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जॉन मार्शल और उनके जो थ्योरी को जो फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिया, ठीक है. क्या पॉइंट्स दिया है? फॉर विच ऑन द बेसिस ऑन विच दे हैव फॉर्म्ड दिस ओपिनियन. फर्स्ट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स इन द Harappan civilization, ठीक है. That is, unlike the Mesopotamian ziggurats or the Egyptian pyramids, the Harappan sites do not show monumental sculpture or decorative temples, right? So they argue that the Harappans prioritized functionality over utility. अच्छा, इसमें just try to see how I have written this. एक आंसर को सिर्फ लिखने से नहीं होता है, we also have to work on the presentation of that answer, right? मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर 1 बना करके मैंने एक लिखा, आई रोड द एनालिसिस ऑफ दैट पॉइंट बाय मेकिंग एरो हेड्स अंडर इट. इससे क्या है, नीट लगता है, एग्जामिनर जो है उनको चेक करने में भी ईजी होता है, ठीक है. आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, यू ऑल्सो हैव टू, सिर्फ कंटेंट से नहीं दिखता है, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है. सो ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स एज वी प्रोसीड. सेकेंड द सेड इज सिंप्लिसिटी ऑफ द फिगर्स. व्हाट दे आर सेइंग इज कि ज़्यादातर जो हमें फिगर्स मिले हैं, ज़्यादातर जो हमें टेराकोटा इमेजेस वगैरह मिले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, मोस्ट ऑफ देम आर क्रूड. मतलब जैसे हमें अगर मदर गॉडेस का फिगरिन मिला है तो वो क्या है, क्रूड हमें देखने को मिलता है ना. बहुत अच्छे से आईज, नोज एट्सेट्रा जिस तरीके से है, हमें बहुत रिफाइंड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से चिजल्ड तरीके से नहीं है. सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ क्रूड, ठीक है. क्रूड एंड मास प्रोड्यूस्ड. इट सीम्स कि एक एक करके नहीं प्रोड्यूस किया गया है, मतलब लॉट के हिसाब से उसको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है. टेकिंग एंड लैकिंग इंट्रिकेट डिटेल्स. सो बेस्ड ऑन दिस द अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट लाइक जॉन मार्शल कमेंटेड हरप्पन एज यूटिलिटेरियन, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट इज लिमिटेड स्केल ऑफ पेंटिंग्स. हाँ, अगर आप देखते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, द पिरामिड्स एज वेल एज देर आर अदर पेंटिंग्स, मतलब वो बड़े से क्राउन के संग विथ पॉइंटेड आईज एंड ऑल्सो देर आर पेंटिंग्स. तो हरप्पन सिविलाइजेशन में इस तरीके कोई हमें कलरफुल कैची पेंटिंग्स एट्सेट्रा हमें नहीं देखने को मिलता है. तो इसके बेसिस पे भी उन्होंने क्या बोला कि दे लैक्ड आर्टिस्टिक सेंस. बट what is the opinion of the other side? So the other group says that the Harappan art should be seen in its own unique way. For example, इन्होंने बोला है the sculptures of stone and metal जो हमें मिला है हरप्पा में. For example, we have the bronze dancing girl and we have the priest, the bearded priest. Bearded priest क्या है, एक stone का sculpture है. This dancing girl shows basically what, shows their metal casting technique, the lost wax technique जो उनको पता था. तो ये सब भी क्या है, ये सब भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है. ज़रूरी नहीं है कि ये सब उस तरीके के परफेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे, बट हरप्पन्स के हिसाब से डेफिनेटली दिस वॉज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, राइट. नेक्स्ट व्हाट दे से इज द सील्स एंड द ग्लिफ्टिक आर्ट. ग्लिफ्टिक आर्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी आर्ट एंड कल्चर, अगर आपने पढ़ा होगा, इन इफ़ यू रीड अबाउट पेंटिंग्स एंड ऑल, यू विल फाइंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है. बहुत बार क्या होता है कि केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स बना होता है, ये पेंटिंग्स बहुत बार क्या खुदाई करके भी बना होता है स्टोन पे. ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो कलर पेंट ब्रश वगैरह से भी हो. सो बेसिकली हर चीज़ एंड इस ओके. एंड वन मोर वीडियो वॉज देयर ऑन दिस चैनल जिसमें आई हैड द कोर वीडियो, ठीक है. इस चैनल पे क्या है, वी आर डूइंग क्वेश्चन डिस्कशंस ऑल्सो, एज साइड बाय साइड वी आर ऑल्सो अपलोडिंग कोर टॉपिक्स जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके बिना हम जितना भी आंसर सॉल्व कर लें
हमारा अगर कोर सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, तो हम इसको भी नहीं कैचअप कर पाएंगे. सो फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई हैव मेड दैट वीडियो. इन दैट वीडियो द फर्स्ट वन इज अबाउट सोर्सेज. तो सोर्सेज में मैंने क्या बोला है, सोर्सेज में मैंने बोला है कि हाउ इवन पेंटिंग्स कैन बी अ source of history. That is part of what? That is part of architectural sources, archaeological sources, right? तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि सील्स के ऊपर भी जो फिश बना हुआ है, जो फॉर एग्जांपल दिस वन हॉर्न राइनो, न्यू एडिशन ऑफ उपिंदर सिंह में पेज 184 में वन हॉर्न राइनो बना हुआ है, ठीक है, सील के ऊपर, द सील का इमेज इज गिवन. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पॉटरी के ऊपर भी कुछ कुछ फिश बने हुए हैं, कुछ टेराकोटा के टॉयज मिले हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो शो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है. सो आर्टिस्ट दे शो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, सिम्बॉलिक मीनिंग भी है उनका, टाइनी डिटेल्स. सो दिस शोज आर्टिस्टिक अवेयरनेस एंड आर्टिस्टिक माइंडसेट. नेक्स्ट इज द ऑर्नामेंट्स एंड अदर क्राफ्ट्स. एग्जैक्टली, कि भले ही हमें उस तरीके से बड़े बड़े स्टैचूज वगैरह नहीं मिले हैं, बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, बट डेफिनेटली वी हैव फाउंड ऑर्नामेंट्स. उन ऑर्नामेंट्स में भी डिज़ाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से बीड्स को सजाया गया है, डज इट नॉट शो आर्टिस्टिक माइंडसेट? इट डेफिनेटली शोज आर्टिस्टिक माइंडसेट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग इज देयर. नेक्स्ट इज दैट ऑल्सो शोज अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी. कुछ हमें कोम्ब मिला है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अ वैनिटी बॉक्स हैज बीन फाउंड. सो दैट शोज व्हाट? दैट शोज आर्टिस्टिक माइंडसेट, स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, ठीक है. नेक्स्ट इज पॉटरी एंड टॉयज, फिश, पिकॉक, पीपल ट्री, इस तरीके से बना हुआ है. ऑल्सो अबाउट द अर्बन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है बड़े मॉन्यूमेंट्स हमें नहीं मिले हैं, बट डेफिनेटली वी हैव फाउंड टाउन्स, प्रॉपरली प्लान टाउन्स, प्रॉपरली लेड आउट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. दैट इज ऑल्सो शोइंग आइडिया ऑफ सिमेट्री, एन आइडिया ऑफ एन आर्टिस्टिक माइंड सेट. इवन टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न, प्रोपोर्शनेट हाउसेज, ड्रेनेज पैटर्न आर एन एस्थेटिक, show aesthetic order and symmetry, right? So this is what you have to write in the question. You write it yourself, keep it with you. After 1 week I'm going to launch this, 1 or 2 weeks I'm going to launch this course. It's going to be a very minimal amount. Maybe it will be around 500 rupees monthly that you can pay, and you, in that, every week you can send me 2 or 3 questions by mail. I'm going to check it and return it back to you, right? So it's still in a planning stage. We are going to see how far I'm being able to do that, because also I have to manage the other things. So anyways, for now let us move forward. The views of historians जो हमें इस टॉपिक के लिए पता होना चाहिए. For example, we have John Marshall, इनका हमने already discuss कर लिया. We also have Mortimer Wheeler, very important. What he says is, he acknowledged that yes, seals and figurines are also evidence of artistic impulse. तो इसको क्या है, जब हम अपने आंसर लिख रहे हैं ना, तो इनका ओपिनियन हम क्या कर सकते हैं, बीच में we can use his name and his argument to substantiate our view. And definitely Upinder Singh shows that absence of monumental art should not be seen as lack of artistry. Rather, the Harappan art must be understood within its own cultural framework, right? And in the conclusion, you have to give your own balanced opinion and include the view of some historian out of these, whosever view aligns the best with you, right? So thank you for being along, and do subscribe to the channel. It acts as a motivational boost, right? And definitely we are going to upload other videos also. I'm also going to provide a summary of Upinder Singh. That is very important. You should not miss that. So yes, thank you and stay rooted. And do follow our Telegram channel for notes, right? Okay.